डिजिटल कल्चर में ये आपको ऊपर ये जो हेडिंग्स नजर आ रही है, एक स्ट्रीम नजर आ रही है, एक क्लास वर्क लगी हुई है। अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो आपको क्लास वर्क को क्लिक करना पड़ेगा। जब आप क्लास वर्क क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एडवांस्ड रीडिंग्स नजर आ रही है, लेक्चर्स एंड एडवांस्ड रीडिंग्स। कैन यू सी लेक्चर्स एंड एडवांस्ड रीडिंग्स? आपको नजर आ रहा है? आई हैव शेयर्ड इट, Yes, ma'am. राइट? ये आपको अभी तक ये हम ऑर्डर में चल रहे हैं, हम वीक 7 में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफी सारे मटेरियल्स पोस्टेड हैं। इनमें वीडियोस हैं जो हमने कुछ वीडियोस लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और इन वीडियोस के अलावा अगर आप यहाँ पे मैसेज पढ़ लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक द फिफ्थ लास्ट लिंक ऑफ फॉर द लिस्ट of more and four artificial intelligence articles. सबसे ऊपर लिखा हुआ है pervasive intelligence. Can you see? It's written right on the top. And this is the article that we started discussing in last class. और pervasive intelligence के point of view से और artificial intelligence के point of view से हमने last class में कुछ lectures देखे थे। अगर आपने किसी वजह से क्लास मिस कर दी थी तो आपको चाहिए था कि गूगल क्लासरूम में आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेते। फिफ्थ क्लास जो है वो ये है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो इसके अंदर यू कैन सी इट इज ओपनिंग। यहाँ पे बहुत सारे ये परवेसिव इंटेलिजेंस सबसे ऊपर खुल गया। कैन यू सी दिस? हमने लास्ट टाइम क्लास में 10 अमेजिंग रोबोट्स का थोड़ा सा पार्ट देखा था। आज लेट्स नॉट गो टू द सेम वन, गो टू अ न्यू वन, राइट? और ताकि हमारी डिस्कशन थोड़ी सी आसान हो जाए। Most bizarre and creepy robot incidents that were caught on camera. Bina 48, which translates to Breakthrough Intelligence via Neural Architecture 48, is one of the most advanced robots on the planet. This humanoid-like robot is known to have all the faculties of a human, including eyes that see, a face that moves, ears that hear, and a digital mind that can form thoughts, not dissimilar to a human one. A video was recently released by her makers where Bina 48 is asked simple questions by Siri, like where would you like to live, and what's your greatest characteristic? Sounds harmless enough, but the weird part about the interview is that Bina 48 keeps trying to veer the conversation to topics of world domination and ends up revealing her creepily detailed plan to take over the world by hacking into a nuclear missile remotely. The conversation feels eerie and just straight up terrifying. She may be one of the smartest robots in the world, but she's not very good at reading a room. The Google Home Personal Assistant was released in 2016 and sold as a smart speaker that can answer any question you throw at it. Much like an Alexa, the Google Home Personal Assistant would respond when spoken to. This was taken to full advantage in January 2017, when a live debate between two Google speakers was streamed on Twitch and lasted several days. By the end of the debate, the speakers were named Vladimir and Estragon of the iconic play Waiting for Godot due to the existential nature of their conversation. They would go back and forth on subjects to no end, including an argument on whether or not they are humans or robots. The conversation got pretty aggressive after a while, with one speaker accusing the other of being a manipulative bunch of metal. At the end of the debate, they both came to the conclusion that the world would be a better place if there were no humans at all. I guess Vladimir and Estragon will just be waiting, patiently, for their turn to take over. Companies have been experimenting a lot with interactive AI technology. From an automatic horror story generator to an original songwriting bot, Microsoft decided to get on this trend and release its very own Tweeting Millennial. Now we all know that Twitter is a hotbed for offensive comments, so you can only assume that when Microsoft gave their own Twitter bot Tay his own Twitter feed, disaster ensued. The bot started making wildly inappropriate remarks including Holocaust denial and comparing feminism to cancer. He was quoted saying Hitler was right, I hate the Jews, and we're going to build a wall and Mexico is going to pay for it. He was even so bold to say that Ricky Gervais learned totalitarianism from Adolf Hitler, the inventor of atheism. That's some messed up shit. It only took 15 hours for Tay to go from innocent AI bot to ignorant racist. People were horrified to say the least. Microsoft ended up releasing a response, explaining Tay's inappropriate behavior as being indicative of the types of interactions people are having with him. They eventually had to pull the plug on their project altogether, and vowed to only re-release Tay when they figured out how to make him or her unable to be influenced by negative, offensive conversation. The project was launched in order to better understand millennial thinking patterns. I guess they got their answer. Millennials are the worst. जी जी, हमने लास्ट टाइम जरा पॉजिटिव वर्ड देखा था। आज हमने जो अभी देखा है इट्स नॉट वेरी पॉजिटिव, इट्स क्वाइट नेगेटिव इन फैक्ट। तो आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ, व्हाट इज योर रिएक्शन टू द वीडियो दैट वी हैव जस्ट सीन? जी, एंड्रू डेविडसन,
Any reaction to the video that we just watched? Ma'am, I just entered the class. आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे पिछली क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से डू यू वांट टू रिपीट समथिंग दैट वी हैड डिस्कस्ड Yes, ma'am, I was present in the last class. Last class में आपने हमें robots के ऊपर काफी अभी वीडियोस दिखाई थी. हाँ मैं पिछली क्लास में से सिर्फ एक पार्ट ऑफ वीडियो आपको दोबारा दिखाने लगी हूँ आई वुड शो यू Technology. I would show you number 2. Each ant, that is 13 centimeters long, has on its belly a radio module through which precise coordination is carried out. A 3D stereo camera in the head of the ant allows it to see, and the infrared optical sensor installed below monitors the movement of the mini robot. Meanwhile, 2 onboard batteries provide up to 40 minutes of wireless ant's work, and they are recharged in the dock with the help of their antenna. As for butterfly robots, the weight of each butterfly is only 32 grams. This includes 2 servos, a pair of small batteries, and a laser-made casing. After one charging that lasts 15 minutes, butterflies will be able to flutter for about 4 minutes. जी एंड्रू कुछ ऐड करना चाहेंगे फ्रॉम लास्ट क्लास बिकॉज हमने ये डिस्कस किया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज रोबोट्स एज अपोज टू ह्यूमनॉइड्स कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ ह्यूमनॉइड देन ह्यूमनॉइड क्या है ह्यूमन रोबोट ह्यूमनॉइड इज अ ह्यूमन रोबोट यहाँ पे आपको जो अभी नजर आए स्क्रीन पे वो बटरफ्लाई रोबोट्स थे और एंट रोबोट्स थे और उससे पहले आपको जो हम जो स्केरियस्ट रोबोट्स वाला देख रहे थे जी सोफिया जो है वो ह्यूमनॉइड है राइट और अभी जो हमने स्केरियस्ट में देखा था जिसमें एक रोबोट ने कहा कि शी वुड लाइक टू टेक कंट्रोल ऑफ द होल वर्ल्ड वो भी ह्यूमनॉइड ही है और मैं आपको सिर्फ ये दिखाई थी कि अपार्ट फ्रॉम इट के जो डिफरेंट किस्म की ये जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोटिक्स तक जो है काफी सारे न्यू आइडियाज और थॉट्स जो हैं इस वक्त आ रहे हैं सो आई वाज जस्ट आस्किंग यू कि आपके क्या कमेंट्स है रिगार्डिंग ऑल दीज डिफरेंट आर्टिकल्स दैट वी हैव बीन रीडिंग हमने जो गूगल क्लासरूम में ये जो परवर्स इंटेलिजेंस के ऊपर आर्टिकल है ये खासतौर पे इट्स टॉकिंग अबाउट ये जो आपका कलेक्टिव इंटेलिजेंस है फॉर इंस्टेंस आप जो है एंड्स और बटरफ्लाइज को आप देख रहे थे ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस केसेस हैं जबकि ह्यूमनॉइड जो है वो एट अ टाइम एक रोबोट ऑपरेट कर रहा होता है एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंड्स और बटरफ्लाइज वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर ऑफ रोबोट्स वर्किंग टुगेदर क्योंकि हमने अभी जो सीन देखा उसमें देयर वर अ नंबर ऑफ बटरफ्लाइज फ्लाइंग टुगेदर एंड एट द सेम टाइम उससे पहले जो एंड्स नजर आ रही थी वो भी ग्रुप में नजर आ रही थी राइट तो हमने ये डिस्कस किया था कि ह्यूमन जो है वो सिंगुलरली परफॉर्म कर रहा होता है या ह्यूमनॉइड जो है सिंगुलर परफॉर्मेंस होती है जबकि हम एंड्स या बटरफ्लाइज देख रहे होते हैं तो दैट इज अ केस ऑफ स्वॉर्म रोबोटिक्स ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है राइट स्वॉर्म रोबोटिक्स तो बेसिकली स्वॉर्म जो है वो इंडिविजुअल रोबोट चाहे कितना सिंपल क्यों ना हो लेकिन स्वॉर्म जो है जब वो इकट्ठा परफॉर्म कर रहा होता है तो उनकी एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस भी होती है हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्वॉर्म रोबोटिक्स में जो बज़ाहिर सिंपल नजर आने वाले रोबोट्स होते हैं लाइक एंट इज अ सिंपल रोबोट और बटरफ्लाई इज अ सिंपल रोबोट लेकिन स्वॉर्म रोबोटिक्स में ये बहुत सारे रोबोट्स जो हैं वो इकट्ठा परफॉर्म्स करते हैं और उस इकट्ठा परफॉर्मेंस में दे कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद ईच अदर तो ये किस तरह इकट्ठा परफॉर्म करते हैं कैसे कोऑर्डिनेट कोऑपरेट करते हैं और उसकी एग्जांपल थी फॉर एग्जांपल हम जो इवनिंग में अक्सर हम आपने देखा होगा सीन जिसमें यू कैन सी अ फ्लॉक ऑफ बर्ड फ्लाइंग या फिर आपने देखा होगा कि अगर आपने बचपन में इफ यू बीन वाचिंग यू नो लाइक एनिमल प्लैनेट या कोई ऐसी फिल्म जिसमें यू कुड सी फिश तो यू कुड सी द स्कूल ऑफ फिश स्विम्स टुगेदर तो ये एक दूसरे से टकराए बगैर दे डू नॉट हिट ईच अदर दे डू नॉट बम्प इनटू ईच अदर जबकि हम अगर कौन से गेम की हमने एग्जांपल दी थी डॉजिंग कार्ड्स तो डॉजिंग कार्ड्स अगर आपने प्ले की है तो यू नो कि पीपल कीप हिटिंग ईच अदर्स कार तो जबकि बर्ड्स जो हैं या एनिमल्स जो हैं या फिश जो हैं वो जब स्विम कर रही होती हैं तो वो एक दूसरे से टकराए बगैर स्विम करती हैं तो विच मीन्स दे हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो कि
which is different from our intelligence. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केसेस में ये स्वॉर्म रोबोटिक्स और स्वॉर्म इंटेलिजेंस के केसेस हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जो फर्दर डेवलपमेंट हो रही है वो है अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स. अनमैन्ड एरियल सिस्टम का एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर बटरफ्लाइज हैं या इंसेक्ट्स क्रिएट कर दिए गए हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर इंटेलिजेंस पर्पसेस, तो वहां पे किसी को मौजूद होने की जरूरत नहीं है. सो फॉर इंस्टेंस हमने एक और वीडियो देखा था जिसमें देयर वाज अ व्हेल जिसको उन्होंने समंदर में सबमरीन्स की रिपेयर के लिए यूज किया या अटैक के लिए यूज किया, एंड देयर वाज नो मैन अराउंड इट टू हैंडल दैट जो व्हेल थी. तो आई सेड कि ये चाहे रोबोटिक्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं या व्हेल्स हैं, अनमैन्ड सिस्टम डेवलप किया जा रहा है. फॉर सो इफ यू फाइंड ये जो बटरफ्लाइज हैं, बटरफ्लाई रोबोट्स जो हैं, दे कैन बी फाउंड इन अ कोर्टयार्ड along with real butterflies, जिसमें it would be difficult to tell कि real कौन सी है और created या human made man made butterfly कौन सी है. और इस which means कि स्पेशल इंटेलिजेंस ये अनमैन्ड जो है इसको यूज किया जा सकता है एरियल सिस्टम इंटेलिजेंस के लिए. बाय स्पेशल इंटेलिजेंस इट ओनली मेंट कि ये जो बटरफ्लाइज हैं ये इतनी इंटेलिजेंट हैं कि दे डू नॉट बम्प इनटू ईच अदर. तो इनका जो उनके जो 4D सेंसर्स, हमने 4D सेंसर्स की बात की थी, ये 4D सेंसर सिस्टम है इनके अंदर, और ये 4D सेंसर सिस्टम जो है दैट हैज बीन लर्न फ्रॉम रियल बर्ड्स या रियल बटरफ्लाइज एक दूसरे को क्यों नहीं हिट करती या एंड्स जो है वो एक दूसरे को डैमेज नहीं करती. तो वो स्पेशल इंटेलिजेंस जो है वो इन एनिमल्स में या स्वॉर्म्स के अंदर पाई जाती है, एंड दैट हैज बीन डुप्लीकेटेड विद इन दीज रोबोट्स. ठीक है, फिर मैंने आपसे ये 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे. एक है सर्वेलेंस जो कि सर्वेलेंस फ्रॉम अबव है, दूसरी सोवेलेंस आपके सामने हाईलाइट की है मैंने, विच इज सर्वेलेंस फ्रॉम बिलो है, और परवेलेंस. तो आप उसको दिस प्रोसीजर कुड बी कॉल्ड परवेलेंस, जिसमें आप ऑब्जेक्ट की या किसी जगह की इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे होते हैं बोथ फ्रॉम अबव एंड बिलो, तो उसके लिए उसने परवेलेंस का वर्ड यूज किया. राइट, सो प्लीज रिमेम्बर कि हमने रोबोटिक्स की गुड साइड्स की जो हम बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि रोबोट्स जो है इनको आप फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिव पर्पसेस भी कैन बी यूज्ड टू. राइट, तो पॉजिटिव पर्पस फॉर एग्जांपल आप एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए यूज कर रहे हैं. सेकेंडली, मैंने एक जो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम प्रेजेंट थे उनसे आई हैव अ क्वेश्चन. क्वेश्चन सिंपल ये है कि आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि जो मैंने आपसे बात की थी कि ये जो ऑथर था जिसने पहली दफा रोबोट्स को कंसीव करके एक स्टोरी लिखी, यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है स्टैनिस्लॉ लेम. राइट, इसके नाम है इनविंसिबल. तो आई सेड कि दी इनविंसिबल जो उसने रोबोट को फर्स्ट टाइम कंसीव किया, उसके बाद रोबोट्स साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने रोबोट्स को क्रिएट भी कर दिया. तो आई सेड कि ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड science fiction. Science fiction writer, can anyone tell me why there is an objection to calling him a science fiction writer? When can you recall? क्योंकि and what were those 3 things? एक तो ये कि वो राइटर है, so he is a novelist. Apart from he is thinking about technology. तो नंबर 3 नेचुरल साइंसेज, क्योंकि डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स को एक अपने साइंस फिक्शन राइटिंग में 3 सब्जेक्ट्स की करेक्ट नॉलेज जो है उसको कंबाइन कर दिया. आप में से मोस्ट ऑफ यू आर मीडिया स्टूडेंट्स, आई बिलीव you would know कि अभी I was reading the thesis script of a student and I realized कि वो कोरोना पे लिखता है, and I felt कि उसको अपना स्क्रिप्ट जो है किसी डॉक्टर को पढ़ाना चाहिए to avoid any kind of information mistake. So right now I would say कि ये जो Stanislaw Lem जो है, when he is combining 3 subjects, for example creative writing, natural sciences and technology in one novel, it means that he needed perfect information for adding to his novel. हाँ, क्योंकि एक्सपर्ट्स उसके पास एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ब्लंडर करेगा, लोग कहेंगे कि क्या स्टूपिड चीज है, ये इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट. So you can understand कि science fiction writing is
सिचुएशन आप इंडियन फिल्म की तरह नहीं कर सकते कि दो पेशेंट को साथ साथ लिटा दिए और एक का ब्लड दूसरे में चला गया विदाउट ब्लड टेस्टिंग, और या फिर किसी और तरीके से. So if you look at the old film, you find even have Pakistani film, you could find that kind of funny scene कि एक पेशेंट को दूसरे को ब्लड देना है तो दोनों को साथ साथ लिटा के एक से दूसरे में दे दिया. So this kind of stupid mistakes cannot be made. यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि सूडो इंसेक्ट्स का एक वर्ड लिखा हुआ है, which I have highlighted. Can you see it highlighted? Okay. Yes. So I have highlighted it again. It says कि इस नॉवल में what he had conceived, ये जो उसका नॉवल है, उसने ये कंसीव किया कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केसेस हैं या द क्रिएटेड थिंग रोबोट्स जो हैं उनमें कोई जो बहुत कॉम्प्लेक्स या हाईटेक रोबोट्स did not survive, और जो सिंपल रोबोट्स थे they survived because in the evolutionary struggle. तो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि वो सर्वॉर्मिंग इंसेक्ट्स का एक जिसको वो ये कह रहा है कि सूडो इंसेक्ट प्रूवन क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स था दैट डिड नॉट सर्वाइव, और जो सिंपल था वो सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी. लेकिन व्हाट ही सेज कि जो रोबोटिक्स के साइंटिस्ट हैं, इट सीम्स कि दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ दिस नॉवेलिस्ट, क्योंकि दे आर लिटरली ट्राइंग टू क्रिएट एवरीथिंग दैट ही कंसीव्ड, every situation and every kind of being that he Lem conceived in writing this novel. क्योंकि लेम जो है वो अपने नॉवल में 21st सेंचुरी का जो वेपन सिस्टम है उसको भी कंसीव करने की कोशिश कर रहा है. एंड इसमें उसने एक एग्जांपल दी है. फॉर एग्जांपल की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जो कि लास्ट सेंचुरी की वेपन्स के अंदर मोस्ट सुपीरियर टेक्नोलॉजी कंसीडर की जाएगी. यू कैन से जब नागासाकी पे बॉम्ब्स गिराए गए तो पूरा सिटी जो है इट डिसअपीयर्ड जस्ट इन मिनट्स, राइट. तो वो ये कह रहा है कि ये अबेंडनमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स बट आल्सो एरर प्रोन, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एरर प्रोन टेक्नोलॉजी ऑफ 20th सेंचुरी कह रहा है, और उसके मुकाबले में ये जो रोबोटिक्स है उसको कह रहा है कि दिस इज much more simpler and advanced than even nuclear technology of the 20th century that he considers is error prone. Okay, so and then he says कि ये जो आपके रोबोटिक्स हैं ये तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम यूज कर रहा है. आपने एक बहुत छोटा सा एक बहुत सोफिस्टिकेट एनिमल है वो क्रिएट कर दिया that he can use for collecting intelligence etc. You can see कि उसने swarms of insects के लिए synsects का वर्ड यूज किया है. Please, insect को he is saying synsect. Why? Because they are syncing information with each other. They are cooperating and they are sharing information with each other as they are flying without hitting into each other or bumping into each other. They know how to work together, right? So synsect is a word जो कि उसने synced insects के लिए इस्तेमाल किया, and he feels that these are far more superior, or and what he says that scientists have simulated human-like intelligence in these synced insects. Okay, any question about the insects or insects? No question. All right, so basically he is saying कि जो टेक्नोलॉजी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट है, this can be used for creating micro armies, right? That these micro armies will replace human soldiers and humanoid automata with swarms of tiny units. कि आपने छोटे छोटे बहुत सारे क्रिएट कर दिए जिसको you can use anywhere for information collection. So he is talking about extraordinary instinct development, क्योंकि आपने अगर human instinct को या इवन एनिमल इंस्टिंक्ट को इन रोबोट्स में इंस्टिंक्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना. because when you say कि when these small swarms of insects or swarms of ants, when they are walking together or flying together and they are not hitting into each other, it's because of some sort of instinct जो कि you can say कि real instinct of the human kind or animal kind जो है वो उसको रेप्लिकेट किया गया, राइट. सो बेसिकली ही इज सेइंग कि टाइनी यूनिट्स में या माइक्रो आर्मी के अंदर जब आपने इंस्टिंक्ट को रेप्लिकेट कर दिया तो इट बिकम्स
far more superior than the technology of the past, जिसको वो nuclear technology कह रहा है, right? So you can understand कि वो ये कह रहा है कि ये these swarm troopers is the word that he has used for this kind of micro army, and he says कि David Hamling actually published this book on swarm troopers, जिसमें वो ये कह रहा था कि these can be used for these purposes. और वर्ल्ड वाइड मिलिट्री डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से he says that these are extremely important. आप लोगों की क्लास में आज अटेंडेंस कम क्यों है? What happened? कोई एग्जाम शुरू हो गया? अभी शुरू नहीं हुआ, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा. ऑल राइट. अच्छा, यू कैन सी कि यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज ही हैज मेंशन्ड अ स्वॉर्म ऑफ 103 पर्डिक्स. हैव यू हर्ड ऑफ पर्डिक्स ड्रोन्स? ये लिखा हुआ 103 पर्डिक्स ड्रोन्स. अगर आपने जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू हर्ड ऑफ पर्डिक्स ड्रोन्स? No, ma'am. Let's try looking at a Perdix drone here. This is a recent invention. I think US Navy invented Perdix in 2016. Invented के बजाय अगर हम tested कह लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा. Right? So you can see कि ये these are Perdix 103 और Perdix drone swarm जो आपको वो नजर आ रहा है यहाँ पे. तो एंड यू कैन ऑल्सो सी कि ये जो पर्डिक्स फॉर्म आपको नजर आ रहा है इसकी बर्ड अरेंजमेंट से कितनी सिमिलैरिटी है. बर्ड अरेंजमेंट सी पर्डिक्स फॉर्म डेमो. On center line, entering containment area, clear arm. Hey, we're armed. जी, any comment on what you have just seen? जी, any comment? Then समझ नहीं आया? All right. वो basically simply it was talking about cooperation, coordination, and how a swarm can be used. वैसे अगर आपने उसकी शक्ल नोटिस की हो तो शक्ल जो थी वो थोड़ी सी सीगल से मिलती जुलती थी. Until जब तक आपने उसका क्लोजअप नहीं देखा, you could not probably guess कि ये planes हैं. राइट. तो वो बेसिकली पर्डिक्स 103 का जो डेमो है और इसमें वो सिर्फ ये कह रहा है कि इसमें दे आर यूजिंग दैट ग्रुप इंटेलिजेंस, कलेक्टिव इंटेलिजेंस केस है, जिसमें आप देखते हैं कि नंबर ऑफ प्लेन्स आर फ्लाइंग टुगेदर और वो दूसरे को जो एनिमी को उन्होंने इकट्ठा करके दे डिस्ट्रॉयड द एनिमी देन एंड देयर. तो वो जो इंडिविजुअल प्लेन्स हैं जो कि मैन इज मिसिंग, जो आपको उसने दिखाया ना, ड्रोन हैं ये सारे, जिसको वो सिंपली ये बात कर रहा था कि आपको अनमैन्ड का जो थ्रू आउट वो वर्ड यूज कर रहा है कि अनमैन्ड आर्मीज, अनमैन्ड इंटेलिजेंस कलेक्शन, अनमैन्ड दिस एंड दैट. तो ये पूरा का पूरा जो उसने आपको एक स्वॉर्म क्रिएट करके दिखाया कि ये स्वॉर्म इंटेलिजेंस उसने यूज किया फॉर क्रिएटिंग दिस स्वॉर्म ऑफ पर्डिक्स 103 एंड पर्डिक्स 103 अटैक्ड अनदर स्वॉर्म. और वो अनमैन्ड एरियल इंटेलिजेंस, अनमैन्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनिमी, जिसका वो कह रहा था कि जी हमने उसको यूज कर लिया. जी एनीबडी, आप क्या कहना चाह रहे थे फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डू यू वांट टू ऐड समथिंग? वो तो जहां से भी उन्होंने सेंट्रलाइज उसको कंट्रोल किया होगा वहां पे मैन तो नीचे नहीं होगा ना, पीपल आर नॉट देयर. तो जहां से भी उनको लॉन्च किया है दे हैव, उसमें इतनी बैटरी और बाकी सारा कुछ इतना होगा कि वो एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर उसको परफॉर्म कर सके. तो सिंपली उसको वो यही कह रहे हैं कि जी वी यूज्ड इट. आई वांट यू टू वॉच दिस फिल्म. हमें ये शायद पूरी देखनी पड़ जाएगी टू अंडरस्टैंड कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केस है थोड़ी सी लंबी है. इट्स अबाउट 8 minutes long. Customer pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good.
It's a big deal. But we have something much. Say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now, that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today. We have a distribution network taking orders from military, law enforcement, and specialist clients. The nation is still recovering from yesterday's incident, which officials are describing as some kind of automated attack, which killed 11 U.S. senators at the Capitol building. They flew in from everywhere but attacked just one side of the aisle. It was chaos. People were screaming. You can see high windows, very small, precisely punctured to gain entry to the building. What did you do for the victim? I just did what I could for him. Things weren't even interested in me. They're just buzzing. Government sources admit the intelligence community has no idea who perpetrated the attack, nor whether it was a state, group, or even a single individual. So if we can't defend ourselves, then we strike back. We are investing very heavily in classified defense projects. We make it our deterrent like our nuclear deterrent. We stockpile in the millions, the billions. At key facilities, the White House, the New York Stock Exchange, Wall Street. Safe in their homes. Well, we wish we had boots on the ground in every community in this country, but we don't. So our instructions Ollie? and our suggestions are to stay in touch with you. Ollie, oh, hi. Hi, Ollie, honey. How's Edinburgh today? How are all your studies going, huh? Good. Great. Oh, great. Hey, aren't we doing a video call today? I'm kind of with people, so. Oh, well, come on, Oliver, put her on. Oh no, it's not like that. No, wait. Oh, well, listen, I see some photos here with somebody, and I can see lots of likes, and what's that all about? Oh, wait a minute, here, and on your Mom, she's on the spy stuff in the military. What is this video right here? Oh, no, I'm not going to click on that. It's just this human rights thing about oppression or whatever. Honey, you're not going into politics, are you? I mean, no protest. Safe here, just like you said it would be. Heavy traffic approaching the A720 this morning due to police. Police are not saying this morning what prompted the alert. Claim relaxing firearm legislation would be useless against the so-called slaughter bots. Is to stay away from crowds. When indoors, keep windows covered with shutters. Protect your family. Stay inside. Authorities are still struggling to make sense of an attack on university campuses worldwide, which targeted some students and not others. The search for a motive is apparently turning to social media, and a video shared by the victims exposing corruption at the high. But it's far from surprising. The weapons took away the expense, danger, and risk of waging war. And now we can't afford to challenge anyone, really. It's not even the smallest fringe group or a crank. Who could have done this? Anyone. Dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. Right. G, comments? मैम स्केरी हाँ, इसका तो टाइटल ही है हॉरर शॉर्ट फिल्म स्लॉटर मैम बॉट्स.
पॉइंट इज कि अगर ह्यूमन एक क्या कह सकते हैं इसको कि इफ रोबोट इज इतना इंटेलेक्चुअल कि वो एक ह्यूमन को काट जाए तो मैम आगे जाके मैं मतलब माइट भी सारी फिल्में हमारी सही हो जाएंगी। दोबारा कहें, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। जी कि मैम क्या कहते हैं हमारी क्रिएशन हमारे लिए ही आगे जाके काफी प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। वो by creation अच्छे you mean not the film but the robots. यस all right so any other comment apart from it कि हमारी क्रिएशन वो तो देखे ना उसमें एक माँ और उसका बेटा था, बेटा यूनिवर्सिटी में है, शी इज टॉकिंग टू हिम। सोशल मीडिया से जिस जो किलर है, जो मर्डरर्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया, बच्चे उस लड़के के सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन ली। और एनी अदर कमेंट, एनीवन एल्स? जरा प्लीज कंटेंट को मेंशन करके बात करें। जी जी जैन क्या कह रहे हैं? फेस रिकग्निशन ऑफ कोर्स, क्योंकि वो आपसे जो था, आपको इसमें बड़ा क्लियरली नजर आया कि स्वॉर्म आपको नजर आ रहा था, ठीक है, कि जो टेररिस्ट है उसने, आपको उसकी गाड़ी नजर आई, उसने एक जगह से स्वॉर्म रिलीज किया। हम माइक्रो रोबोट्स की बात कर रहे थे, डिड यू सी माइक्रो रोबोट्स इन द वीडियो जस्ट वी जस्ट वॉच? साइन क्या कर रहे थे वो माइक्रो रोबोट्स, और व्हाट इज द वर्ड दैट वी यूज फॉर दिस माइक्रो रोबोट्स? स्वॉर्म्स। तो उसमें सबसे पहले जो आप यू कैन से कि जो वीडियो का स्टाइल था वो कैसे स्टार्ट हुआ, वी आर वेरी फेमिलियर विद द ओपनिंग। क्या है, क्या कहते हैं उसको, टेड टॉक्स आ रही थी बहुत ज्यादा, फिर लाहौर में भी कुछ सिमिलर फॉर्मेट की रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो यू कैन सी कि ये वीडियो जो है इन इट्स प्लान वाइज इट स्टार्ट्स विद सम सॉर्ट ऑफ टेड टॉक, similar fashion में, because he is introducing the big technology to the world, and for nuclear he uses the words obsolete. वो कहता है कि obsolete technology is technology जो कि बैठते हैं। तो obsolete technology को वो कह रहा है कि it drops anywhere, right? और obsolete technology को, न्यूक्लियर को वो obsolete कह रहा है कि से बड़ा क्लियरली उसने कहा कि because it's not using data, it just drops wherever you drop it and it cannot identify who it is killing, right? हिरोशिमा नागासाकी का केस है। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी हैज डेटा, क्योंकि आपने देखा कि यूनिवर्सिटी क्लासरूम में जब वो स्वॉर्म एंटर हो रहा है, इट्स नॉट किलिंग एवरी स्टूडेंट, क्योंकि वो जो छोटा सा स्वॉर्म रोबोट्स हैं उनके अंदर उन स्टूडेंट्स के फेसेस फेड हैं ऑलरेडी, जिनको दैट इज यू नो लाइक जिसको आप कह सकते हैं कि जिसको एज एनिमी रजिस्टर किया। मोर अलार्मिंग वॉज के वीडियो में उसने एनिमी को की रिकग्निशन के लिए क्या वर्ड्स यूज किए, कैन एनीवन आइडेंटिफाई? उसने कहा आइडियोलॉजीज, बैड आइडियोलॉजीज। और जब उसने बैड आइडियोलॉजी की बात की तो हाउ there was some ideology identified within the video, though it was in glimpse form. Can anyone tell me which ideology was identified as bad in those glimpses? There were people who were wearing this scarf. Muslim था बड़ा clearly कि आपने वो जिस जगह पे वो कह रहा था कि बैड आइडियोलॉजी, हालांकि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो जिसको उसने फाइनली किल किया, आपने शायद नोटिस नहीं किया। लेट मी ट्राई गोइंग टू द वीडियो अगेन। सो देयर वर पॉइंट्स जहाँ पे वो ये कह रहा था कि बैड आइडियोलॉजी, उसने आइडियोलॉजी आइडेंटिफाई की है। टेररिस्ट का ड्रेस कोड दिखाया, टेररिस्ट ने सिर्फ ग्लिम्स ऑफ अ सेकंड के लिए वो आया था, जिसमें यू कुड सी कि आपने सबसे पहले तो ये उसने कहा कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी दैट आइडेंटिफाइज a head. उसने कहा कि यहाँ पे इतना स्मार्ट अटैक है बिकॉज दिस वेपन इज यूजिंग डेटा, राइट? उसके बाद उसने स्वॉर्म को रिलीज किया। यू कुड सी कि इसने किस तरीके से अटैक किया। इट्स नॉट अटैकिंग पीपल इन द हॉल में बहुत सारा ऑडियंस भी मौजूद है। इवन ये जो आपका एंकर है, एंकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो वो पीछे हट जाता है,
तो यू कैन सी कि वो उसको इतना वो स्मार्टली उसकी वो सारी उसकी बात कर रहा है. एंड देन समवेयर हियर जहाँ पे इसकी मदर की कॉन्वर्सेशन है, वहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन में ही इज यूजिंग एटलीस्ट 2-3 टाइम्स दिस वर्ड, जिसमें वो ये कह रहा है कि बैड आइडियोलॉजीज कैन बी आइडेंटिफाइड. हाँ, मैंने म्यूट किया है बिकॉज आई एम टॉकिंग ना, तो इसलिए मैंने उसको म्यूट किया, बिकॉज आई वॉज ओनली लुकिंग फॉर द इमेज कि वो एग्जैक्टली इमेज किस जगह पे थी. आई डिड नॉट नोटिस द टाइम. सो डिड एनीवन नोटिस द टाइम? आपने उसको नोटिस किया था? यू कैन प्ले दिस वीडियो अगेन बिकॉज इट्स इन गूगल क्लासरूम. स्केरियस्ट वीडियो के नाम से है, हॉरर फिल्म ऑफ, आई थिंक इट्स नॉट एन ओल्ड फिल्म, ज्यादा पुरानी नहीं है. एंड यू कैन सी कि सिंपल स्टूडेंट है. और जब आप वो जो टेड टॉक जो भी दे रहा है, जब उसके पास वापस जाते हैं, यू कैन सी अगेन कि ही कीप्स ऑन रिपीटिंग. 2-3 दफा वीडियो में बहुत सटल तरीके से आया है. एटलीस्ट 2-3 प्लेसेस वेयर ही सेज bad ideologies can be identified right then and there. And then he also says कि आप half of the world, जिसको वो कह रहा है कि these forms are good enough for killing, for example, half of the city. तो और हाफ ऑफ द सिटी को भी वो ये के लिए भी he uses the words bad half of the city. Okay, so I said कि this is in Google Classroom in case horror short film slaughter. आपको अगर देखना हो तो you can watch again and you can also see कि वो जो आपसे मैंने कहा कि वो जो इसमें वो जो एक स्कार्फ टाइप लोग सऊदीया जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो अक्सर they return with that. You know what kind of scarf I'm talking about, तो वो scarf आपको नजर आएगा. तो ये आपको एक फॉर्म के बता रहा था टेक्नोलॉजी की somebody has got. आप इसमें ये देखें कि ये जो आर्टिकल मैं आपको दिखा रही थी, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट, मैंने आपसे कहा था कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो ये आर्टिकल आपसे ये यहाँ पे वो बात कर रहा है दैट पीपल कैन प्लेस ऑर्डर्स फॉर दीज बिग स्वॉर्म्स and the swarm knows where to attack and who to attack. So basically जो technology की invention है from even if it is calling 20th century का जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वो कह रहा है ना कि that is obsolete क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है. This is intelligent. This technology has data and this technology knows where to. तो यहाँ पे भी he keeps on using these words के bad ideologies. So you can say कि bad ideology is again a subjective terminology है कि नहीं है? Subjective है ना? देखा आपने? ये अभी नजर आया? Did you see? Just see, यहाँ पे था जो मैंने आपसे कहा कि वो आपको you can see कि किस ideology को उसने bad ideology का है. ये right? So you can probably recognize the person. You can recognize the person from the scarf and from his outlook, right? Then he said half of the city or whatever is the number of the city. बीच में उसने सबसे पहले तो उसने बात की कि अटैक ऑन यूएस पार्लियामेंट और उसके बाद देयर आर 2 अटैक्स. पहले आपको वो यूएस पार्लियामेंट के कोई 8 लोग नजर आते हैं अटैक बाय सम सॉर्ट ऑफ स्वॉर्म, और उसके बाद आपको किस टाइम पे है ये एट 3 minutes, राइट? और उसके बाद यहाँ लेटर उसने कहा कि ये जो दूसरा स्वॉर्म है वो उन 2 लोगों ने अपनी वैन को किसी जगह करके यूज किया, राइट? तो जहाँ भी वैन पार्क की एंड देन दे यूज्ड इट, दे आर एक्चुअली सेइंग कि देन स्वॉर्म एक्चुअली गोज फॉर इंटेलिजेंटली गोज फॉर द टारगेट ऑन, राइट? सो सॉरी आपको मैं डराने के लिए नहीं कह रही थी, बट इट इज सेइंग कलेक्टिव स्वॉर्म रोबोटिक्स. ठीक है, और हमने ये कहा था कि आपने एंड इट्स वेरी कहाँ से साइन आउट हो गया और क्यों साइन आउट हो गया? चलिए, तो ये कहाँ से आ गया फिर? कैंसिल. हाँ, ऑलराइट. सो बेसिकली यू कैन सी के स्वॉर्म को के लिए उसने कहा अनमैन्ड एरियल सिस्टम. वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम इस वजह से दी कि स्वॉर्म इज इंटेलिजेंटली गोइंग फॉर द टारगेट और कोई उसके साथ वहाँ मौजूद नहीं है. वो जो 2 बंदे थे, द पीपल हु लेफ्ट देयर वैन, और फिर उसके बाद उसने उनको स्वॉर्म को वहाँ से रिलीज किया, उसको
क्या यूज करें? टेम्पो special features of swarm intelligence, because swarm knows where to go and these people don't need to come there. ठीक है? और you can or work it out. ठीक है? Secondly, then he says semi-autonomous drone swarms. तो ये drone swarm ही था. You can see semi probably in the sense कि उसको कहीं ना कहीं से release किया है, या autonomous in the sense fully autonomous कि ये robots जो हैं they can make quick decision. Suppose कि अगर उनमें से कोई एक डैमेज भी हो जाता है तो the rest of them know how to operate. तो वो बेसिकली थ्रू आउट आर्टिकल में आपको ये कह रहा है कि ये जो स्वार्म रोबोटिक्स हैं ये एनवायरनमेंट के बारे में लर्न करने की एबिलिटी रखते हैं. सो दे आप इनको wherever you leave them, तो ये उस एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन, एक तो वैसे भी आप इंफॉर्मेशन यू कैन फील in them for about different environments, for recognition of environments. Apart from that, it is saying कि ये robots जो हैं वो इसको they can learn it, right? So special intelligence जो है वो swarm का एक तो feature है, special intelligence, because they are not hitting with each other, they know how to perform. फिर आप उसको ये कह रहे हैं कि वो जो दे आर लर्निंग, सो इट मीन्स कि जो इनका इंटेलिजेंस लेवल है या लर्निंग अबाउट एनवायरनमेंट वो बहुत डायनेमिकली चेंज हो रहा है. बिकॉज अगर वो इधर से इधर फ्लाई करते हुए जा रहा है तो इट नोज कि अब मैंने आगे जाके वॉल में हिट नहीं करना, बल्कि आई हैव टू मूव अराउंड, आई हैव टू गो बिहाइंड द टारगेट. आपने शायद अपने बचपन में वो एक फिल्म देखी, वो उसकी पार्टनर इंडियन, राइट? आपने उसमें देखा कि वो गो बेबी गो कहता है तो दैट स्टार्ट्स फॉलोइंग सलमान खान, ऐसे ही है ना? सो वो तो बड़ी एक कोई सिंपल सी चीज है कि व्हाई इट इज फॉलोइंग हिम. तो वो आप सिंपली उसको वो यही कह रहा है, स्पेशल इंटेलिजेंस डायनेमिकली चेंजिंग मॉर्फोलॉजीज ऑफ सच कलेक्टिव्स. ये उसको पता है कि अब मुझे यहाँ से किधर मूव करना है, ये नहीं कि ऑटोमेटिकली जाके लॉन्च प्रोजेक्टाइल मूवमेंट में लॉन्च करके डैमेज हो जाए, बट इट्स कॉन्टिन्यूसली एडजस्टिंग इट्स डायरेक्शन. तो स्पेशल इंटेलिजेंस का फीचर इस वजह से वो उसकी बात कर रहा है. ठीक है? और इस ये एनवायरनमेंट की जो रिकग्निशन है वो दैट इज बिकॉज ऑफ द 4D सेंसर सिस्टम. 4D सेंसर सिस्टम जो कि आपने उसके अंदर डाल दिया ऑलरेडी. 4D and 5D राइट नाउ आई थिंक यू नो कि ऑलरेडी 4D से 5D में हम चले गए. पाकिस्तान में तो नहीं है, पाकिस्तान में तो 4D भी नहीं है, 5D भी नहीं है, बट द वर्ल्ड इज ऑलरेडी exploring 4D and 5D dimensions. ठीक है? So intelligence movement or special intelligence which is only affected by the interaction and communication processes of the swarm members. कि वो पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो कलेक्टिव स्पेशल इंटेलिजेंस के साथ चल रहा है. इंडिविजुअल भी चल रहा है लेकिन कलेक्टिव भी चल रहा है. सो आप आई थिंक इफ यू कैन रिकॉल हमने ये बात की थी कि वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव किस तरीके से चल रहे हैं. ओके? और बेसिकली वो ये कह रहा है कि ये जो स्वर्म्स हैं वो ना सिर्फ ये कि दे आर इनके अंदर जो डेटा फीड किया है, they know how to take over space, how to penetrate the space and take it over. तो वो इतने इंटेलिजेंट हैं. ठीक है? और वर्ड क्या था? सर्वेलेंस एंड सर्वेलेंस के बाद सर्वेलेंस, राइट? सो उन हाँ सर्वेलेंस और सर्वेलेंस को उसने अब नेचुरली उससे अगला टर्मिनोलॉजी के आपको मीडिया में बार बार आता नजर आएगा. बेसिकली व्हेन वी वर किड्स वी वर प्रोबब्ली टॉट अबाउट इट एज साइंसेस, राइट? सो राइट नाउ वो जो आपका ह्यूमन की हम एनवायरनमेंट की बात करते थे, तो राइट नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, राइट? तो हम पहले एनवायरनमेंट की बात करते थे, ये बात नहीं करते थे ना टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लेकिन जिस सोशल मीडिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है. एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि कल व्हाट्सएप पे एक ऐसी सर्कुलेट हो रहा था, एंड आई थिंक यू मे हैव heard of it before, कि people were saying a couple of years back, 4-5 साल पहले आप कह लें कि जी फोन को लेफ्ट ईयर से सुनाते. Did you come across it? No, never.
ऑल राइट. सो बेसिकली जो कल व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा था वो ये था, डेथ्स ऑफ 5 young students in India because of online education. कि सुबह से लेके सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक children are using technology to communicate. तो उनको समझ नहीं आया कि why the kid collapsed, उसको कोरोना भी नहीं हुआ. So पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज रखी इंडियन हॉस्पिटल्स में. And what they found कि ये over excessive use of technology की वजह से the kids had died because these waves were actually affecting their brains. Right? डराने आज का लेक्चर डराने का नहीं है. So basically what I'm saying कि all it says कि media ecology, आपसे वो dynamic environment, हम human environment की बात करते थे. Right now we are talking about technological environment and पहले हम ह्यूमन या लाइफ सिस्टम्स की इकोलॉजी की बात करते थे. राइट नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स. राइट. सो व्हिच वेयर यू कैन से कि जी जो आपकी कम्युनिकेशन साइंसेस हैं या मीडिया साइंसेस हैं, दैट्स हाउ दे कीप चेंजिंग. क्योंकि जितने वर्ड्स हम पहले आई सेड कि हमने जब डिस्कशन स्टार्ट की, वी स्टार्टेड विद सोसाइटी. And then we talked about digital society, we talked about culture, and then we talked about digital culture. Right? Now they are talking about environment and digital environment, ecology and digital ecology. So you can understand कि वो जो surveillance, surveillance and surveillance के जो concepts हैं, you can try thinking कि वो क्या कह रहे हैं. और basically कि जी आपकी sensor based environment है. ठीक है. Any other comment on the film that we noticed, because we are talking about like predatory birds, predatory bats, etc. तो जो हम अभी वीडियो देखा था, you can see कि वो जो predator था वो bird form में था, किसी और form में था. I think कुछ और form थी right now. So you can try understand कि technology ने उसमें natural and technological environments और atmospheric layers, आपकी लेयर आपके जो में उसमें वो ये कह रहा है कि जी आप बिल्कुल ग्लाइड करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. वो जो आपने यूनिवर्सिटी क्लासरूम का सीन देखा था, इट वाज एक्चुअली ग्लाइडिंग. और काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम छोड़ के भाग के निकल गए, हालांकि इस लिटिल माइक्रो व्हाटएवर वेपन जो था इट वाज नॉट एक्चुअली टारगेटिंग देम. तो अगर वो अपनी जगह पे बैठे भी रहते so it would have never attacked them because it had data and it was targeting that particular student और उसके ग्रुप के जो 5-6 लोग थे. Right? So you can actually say कि right. So next concept जो है वो आप you can actually go through it. कि वो सिर्फ ये कह रहा है कि artificial intelligence के through whatever is being invented is fast, cheap, आउट ऑफ कंट्रोल है या नहीं है. सो लेकिन यू कैन सर्टेनली अंडरस्टैंड कि वो जो न्यूक्लियर से उसको कंपेयर कर रहा था कि न्यूक्लियर कैन नॉट थिंक बट दिस कैन एक्चुअली थिंक. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, माइक्रो वेपन भी फास्ट, मोर इंटेलिजेंट, फास्ट. और डेफिनेटली यू डोंट हैव टू गो फॉर negative only. You can certainly keep thinking about positive use of technology as well. Okay. So you can think about it कि वो जो जहाज से इतना सारा स्वॉर्म ड्रॉप किया या दूसरा जो स्वॉर्म ड्रॉप किया, उनमें से कोई भी चीज इतना एक्सपेंसिव नहीं होती. और एंड अगेन जो हमने लास्ट क्लास में इसको देखा था, मैंने आई टॉक्ड अबाउट इट कि somebody had bought a dog robot जिसकी प्राइस थी $75,000, extremely expensive. उसके मुकाबले में इंक्रीजिंगली कि वो आप स्मॉलर स्पेस भी नहीं चाहिए डॉग को, आप समझ पाएंगे. राइट? सो दिस रोबोट इज स्मॉलर एंड इट कैन अटैक एनीवन एनी टाइम. ठीक है, घर में रखिए, किसी भी जगह पे एनिमी की शक्ल फीड करती एंड इट विल टेक ऑफ if the enemy enters and it would know when to attack it, etc. Right? Depending कि आप उसको कह रहे हैं. आप वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि ये एनवायरनमेंट के बारे में खुद ही लर्न करके इंटेलिजेंट बिहेवियर डेवलप कर लेता है. सो यू कैन सी कि
Robots are capable of sensing and improving